Here we go, हाँ जी, as usual, inside my car. इस दफा मैंने माहिन को ऑलरेडी पिक कर लिया. हेलो गाइस. हेलो. और फिर ये एक तो चलाना नहीं आता ना मुझे. अरीशा भी हमारे साथ. अभी हम जा रहे हैं बेराम को पिक करने. Yes, sir. अगर आप लोग देखें नजर आ रहा हो. Everyone's excited for पाकिस्तान वर्सेस सीरिया. माहिन, एक्साइटमेंट लेवल्स बताओ अपने. बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी फुटबॉल मैच देखने के लिए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट इस बार सारा आइडिया था. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील लाइक वी विल विन दिस वन. डू यू फील दैट वे? I never feel that way. यार, आप क्रिकेट में भी यही बोलते हैं. I don't have hopes from our country. नहीं, क्या मतलब कम है, हम जीतेंगे. एतजाज बेराम के घर के बाहर आ गए. बेराम ने अपनी शर्ट पहन के भी आ गया. पानी नहीं लाया वो. मैंने उसे पानी का बोला था. बैठ भी जा भाई. कैसे हो सारे? गुड. ले Sorry, आया मैं पानी भूल गया हूँ. ऐसे भूला नहीं हूँ, मैंने पढ़ा अभी है. ये हमारे कार्ड्स हैं. Now tell me, both of you, Okay. देखते हैं कौन जीतता है. What is Syria's capital? Damascus. Yeah, sure. Yes. All right. Question number 2. What is the Damascus in Urdu? मुझे पता है. Do you know this? हाँ. उसकी एनर्जी बता रही है कि उसको पता है. हाँ नहीं है Damascus ही, बस उसको थोड़ा उर्दूफाई कर दो. सादी तुझे आता है? अच्छा, क्या है साथ? चलो सादी बता दे. दमिश्क. नहीं आता था ना तो. अच्छा जी. What is the name of the tainted Syrian dictator जो बहुत देर से पीछे पड़ा हुआ था मुल्क के? सीरिया का पॉप क्विज हो रहा है यार. अच्छा Behram, I have a question for you. हाँ. Who's the captain of Syria? No clue. अच्छा चलो बता दो. बशर अल असाद. Yes. आखिरी क्वेश्चन, सादी को आंसर आता है. What is the name of Syria in Urdu? हाँ, ये आता है, लेकिन दिमाग खा रहे हैं. आतिफ असलम के एक गाने का लिरिक भी है. यकीन. Hints दे रही हैं वो गाने का. रात सवेरा एक reggae day of time. It's not दोपहर, it's not सुबह, it's not रात. शाम. Ah. Yes. चलो हम फील्ड्स में आ गए हैं सारे मैच देखने के लिए. लेट्स गो टू द स्टेडियम गाइस. सी यू लेटर. वही मैं कहने लगा था. क्या हाल है? कैसे हो भाई? सर Yo. We are sat in our seats. We've got some good company with us as well. Ali Tareen is back on the vlog. Ali, Hello, Pro Sports. back again on Hello, the Janus. vlog. Janis. How are we feeling today? Feeling very confident. Team अच्छी लग रही है हमारी. Inshallah, we have players starting from kickoff, not from coming on half time. Yeah. Syria is a much better team than Afghanistan, unfortunately, but I've been told this is not their Yeah. strongest team. It's the C team apparently. B team है, ठीक है? अच्छा. इज्जत करो उनकी. आदत हो गई है पाकिस्तान को बल्कि टीमों से खेलने की. Daniel Rasool is also here. Danny, Daniel, second What's up, bro? experience for you? सेकेंड एक्सपीरियंस फॉर मी. यस क्या सीन है ब्रो? यार, सीन ये है कि अपेरेंटली हमारे लिए स्टेक्स ज़्यादा हैं बिकॉज दे ऑलरेडी क्वालिफाइड एज आई अंडरस्टैंड इट. लेकिन शायद हमारे लिए भी स्टेक्स नहीं बिकॉज वो क्वालिफाई कर चुके हैं और हमने क्वालिफाई करना नहीं है. so I don't know how this goes, but it's heartening कि जिस दिन पिंडी में क्रिकेट का भी मैच है उस दिन फुटबॉल पे अच्छा क्राउड आया हुआ है. शेख साहब और How are you? कैसे हैं? All good. How are you? फाइनली आपको मौका मिल गया स्टैंड से देखने का. और व्लॉग में भी आने का. व्लॉग में भी आने का. कमेंट्री नहीं कर रहे आप इस दफा? मैं अभी यही कह रहा था कि this is what I wanted to do. Yeah. Enjoy from the stands. क्या सीन लग रहा है? Yeah, I don't know why I'm overly optimistic today. अच्छा. Overly optimistic. Nice है. We'll get a result. Great to hear. We'll get a result. We're getting a result. We're getting a result. 100%. Nice. आद को भी दे दें. आद को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं व्लॉग में. What's up bro? Bus. National anthem Hope dying. and anticipation. National anthem dying. हसीन शादबाद. Pretty solid attempt at the corner kick.
Corner taken not so quickly. Syria on the counter. Yeah! ठीक है भाई, बॉयज बड़ा फिट खेल रहे हैं सादी. Easy! Spread it out! Yeah! Love you, Kunjan. ठीक है. सही है. Yeah, well, I'm 2-0. We're a bit underwhelmed over here. Syria is 2-0 up. Start of the second half, second goal was conceded. Yeah. क्या feelings है सादी? और ना पड़े बस. Yeah. यही काफी feeling. हमें आदत हो गई थी पैसे पहले तो, मगर the last game was 0-0, so Yeah. hopefully Pakistan can score today. Give the fans something to cheer about. But you know, देख ही दिया होगा तुम लोगों ने जो difference है technical in both the teams. How they work the ball, how we work the ball, हमारे players का level और उनके. Yeah. खैर, that's just how it is. Pakistan are also like leaving a lot of gaps through the middle, whereas Syria seem to be a bit more compact. Yeah, Yeah. that's Okay. about it, guys. बस Yep. यही है जो है सो है. क्या यार? Slippingtons हो गई हैं. Slippy G. 5-0. Yeah, game's done. Facebook apology लिखनी पड़ेगी पाकिस्तान को अब सीरिया के लिए. Yeah. And yeah, I mean we still enjoyed those last couple of goals, I suppose. I mean the last goal was really good. That was quality. Yeah. खैर चलो कोई नहीं. जिबी क्या सीन है? यार ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट लाइक दिस, बट ये है कि 4 गोल हमारी तरफ आप जहां हम देख रहे थे वहां पड़े हैं. गोल देख लिया हमने. गोल देख लिए हैं, लेकिन आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर, बट वेल प्लेड स्टिल. फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था. फर्स्ट हाफ I think the game was dead as soon as the second half started. खैर हमदान भाई आप खुश हैं अपने लड़के से? No, not a good performance. Really? I thought it was all right. I think they capitulated after the second goal. Yeah, I don't think they were in the game. That confidence level had gone out. Not good enough. Second goal really killed off the game, right? killed off. And it happened at the wrong moments. Yeah, not the right yeah. moment. Right moment for Syria actually. But, कोई नहीं, मुझे लगता है आइंदा मैं क्राउड में नहीं बैठूंगा. ये दूसरा गेम है, 5 से हम हारे हैं. आप तुम सुनाओ यार. You seem to be quite frustrated. I don't really think it was a final game. I don't think given the quality we have in the squad, I think maximum 1-0, 2-0 पे होना चाहिए था, but I'll just say that. Second, bro. एक second. Let me well, just okay. show this to the people. Yeah, so of course, I think obviously we conceded the second goal at a very weird time, because especially when you're coming in from such a probably dressing room में, you know, there must have been talks where आप नजर आ रहे हैं? अच्छा, तो क्या कहते हैं? So ये वही बात है कि like आप dressing room से आ रहे हो, you're obviously motivated, you're like, okay, we'll get that one goal back, but then instantly you concede a second one, which I think absolutely kills as Hamdan said, kills the game off. I was expecting a bit more from certain players, I would say, considering the impact they made in the first game against probably Afghanistan, the second game. So after that fixture, we should have been like, we're gonna come in like strong for this one. I mean, the first half we started off on the right foot. Yeah, we did, but like, वही बात है ना, when we are attacking Pakistan, we don't get much chances anyway. So we have to make the most of what we are getting. And we should have जो instantly first move में आया था, we should have killed the game in that moment. At least के हाँ चलो एक गोल या 2 गोल मारो and then just बैठ जाओ पीछे. And I think that the Abdullah Shah injury obviously affected us by a very large margin, because again हमारी strategy होती है कि हम half time तक back 5 पे जाते रहेंगे. We don't instantly go for a back 4 instantly, like, you know. Second half में आता है. So I think there's a lot of ups and downs, but again, part of the process. At the end of the Yeah, but again, we have the quality now to at least base level पे compete. Hopefully we get a domestic league going and stuff. So you can see the quality of certain domestic players. It's off the charts for the condition they're already in. So we'd want more of that. We'd want, okay, let's say when they get into a high match or regular match competition, we can expect a lot more. And of course, we need further recruitments on our quality as well, so we can build from there. ये तो expert analysis मिल गया ना. We've got a very disappointed fan over here in Arisha. क्या feelings है? क्या बोलूं मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था, ठीक है, सेकंड गोल के बाद कर लिया था 4-0 होगा या 5-0 होगा. माहिन पीछे झंडे लहरा रही है. She seems to be all right. यार ठीक हो तुम?
सही अच्छा अभी रात में क्रिकेट का मैच भी है हाँ, सिकंदर रजा भट्ट ने जब हराना ना पाकिस्तान को, that's when things will change. चलो दानियाल से भी पूछ लेते हैं यार. जैनी Last time he came here it was 0-0. This time he's seen 5 goals. I've seen 5 goals. जो कहते हैं ना जब हेडलाइंस आती हैं 5 ब्रैकेट्स में फिर 5 लिखते हैं कि to believe के 5 गोल हुए. But you can't hide technical quality. I think everyone saw कि शुरू में थोड़ा बहुत पैशन से पाकिस्तान पहले हाफ आवर में were kind of holding their own. उसके बाद से जब टेक्निकल क्वालिटी उनकी शाइन की, दूसरा गोल early in the second half completely killed them off. And then by the end, I think Pakistan wanted the game to end and Syria were having fun. Everyone did, bro. People are beginning to leave and Syria were having fun. They were good value for the win. I think by the end, हर attack के साथ लग रहा था कि वो गोल करेंगे, and you probably can't begrudge them any of their goals. Fair result in the end. I've got Faizan Sameer with me. You seem to be pretty pumped at the end of this. क्या feelings हैं? कैसा लगा मैच? मैच पहला हाफ तो बहुत अच्छा था, दूसरे हाफ में वी डेफिनेटली स्ट्रगल्ड एंड once we started conceding goals there was no end to it, but you cannot blame the boys, you cannot blame the staff, you cannot blame anyone out of this crew because again principal मसले जो हैं वो वही हैं. हफ्ते 10 दिन के कैंप में कोई आके मैजिक वॉन्ड हिला के कुछ परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकता है. बिल्कुल. The good thing was in the first half we saw we were making a few plays, we were हम 1-2s कर रहे थे, crowd भी उसको enjoy कर रहा था. You see a squad building now and you have to give them time in order to get something out of them. And you're happy overall with Nobby Solano and his tenure? Yes, absolutely. Yeah, we started to see our team making a few passes at least, which was not there in Stefan's time. Yeah. So that is something to look forward to. And if you know football, you have to be able to find the positive signs out of even 4-0, 5-0, 6-0. True. Lastly, यार, of course, you work with a lot of talent yourself. कौन से ऐसे players हैं यार इस पाकिस्तान टीम में, some young blood that you really look forward to in the future? किसने impress किया? Yeah, I think Mohammad Hayan Khattak, he deserves more time. We saw that in Kuwait, he only played for a couple of minutes, but he was able to make a few passes out of it. So we need players जो कि they can create something out of nothing, especially in situations like these. We saw Alam come in. He only played one ball, but that was something we created a chance out of. तो मतलब बाकी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ, सारे डायस्पोरा प्लेयर्स भी अच्छे हैं, सारे लोकल प्लेयर्स भी अच्छे हैं. द पॉइंट इज दे नीड टाइम एंड वी हैव टू बी अ लिटिल मोर कंसिडरेटेड टुवर्ड्स द फैक्ट दैट 10 दिन का कैंप, 12 दिन का कैंप कैन नॉट डू वंडर्स. चलो, here's to hoping we get a league. बाकी have a good one. Thank you so much. Cheers. हाथ थक गया मेरा, bro. Got one of the most spirited Shaheens, Ultra Shaheens with us. I like your shirt, man. Where'd you get this from? Moment. अच्छा. So, My boy. how'd you like the game? Underwhelmed? 5 goal पड़ गए. The first half was unreal. End-to-end stuff. High quality football. Both sides. It was such an even contest. Amazing to see. Second half में गोल पड़ गया फौरन, हवा निकल गई, फिर 5-0 हार गए. वो और बात है. But the first half, spectacular. You'll be here from Myanmar? 100%. It's going to be in March, so we're looking forward to some good weather. And I'll see you guys in March. All right then. Cheers and good luck. अच्छा जी. सादी एक सेकंड कर रहा है क्योंकि उसको बेल्ट बांधनी है. आइलैंड शोर के ये पार्ट ये डाले ब्लॉग के अंदर. बाकी we're on our way back. Yes, sir. Underwhelming जरूर था मगर मजा फिर भी आया. मजा तो आया. First half में बहुत मजा आया. हाँ, I don't think Arisha can say the same. वो बेचारी. देखो मुझे गुस्सा आ रहा था. हाँ. Like 5-0. What is that? Yeah, we can't see you in the camera, but Yes. chalo, Arisha was here, we can confirm. Yeah. Baki of course, no one enjoys losing 5-0, but mahal solid tha. Yes. Everyone gave a solid round of applause to the players at the end as well. And I mean, we got a lot of expert opinion for you guys जो आप सुन चुके हैं. तो ये सब thoughts थी सारों की. बाकी अब मैं और साथ जा रहे हैं क्रिकेट वाला लाइव करने. Life, yes sir. पता नहीं आपको ये वीडियो कब मिलेगी, hopefully soon. Yes. Chalo, Bye bye guys. Take care. Cheers. Bye bye.